दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। स्वागत है आपका सुजस लर्निंग एकेडमी के वीडियो क्लासेस में। इस वीडियो सीरीज में हम 10th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एनसीईआरटी का बुक फॉलो किया है। जो पहला लेसन है वो है रियल नंबर्स। इसमें टोटल 4 एक्सरसाइज हैं। जो पहला एक्सरसाइज 1.1 है उसका वीडियो मैंने बना दिया है। अगर वो आपको चेक करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक बहुत फंडामेंटल थ्योरम है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। सो कोई भी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला बात। दूसरा, फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिखेंगे, दिस इज गोना बी ऑलवेज यूनिक। कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे आप उसको लिख सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि ऑर्डर इन विच दे आर मल्टीप्लाइड, इसको आपको इरेलीवेंट मानना है। जैसे कि 2 into 3 इज सेम एज दैट ऑफ 3 into 2, तो ये ऑलवेज यूनिक होगा। इसको एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। कोई कंपोजिट नंबर 6 है, तो उसको आप लिख सकते हैं 2 into 3, और आप 3 into 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन ऑलवेज ऑलवेज ये 2 into 3 ही के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखना है, यानी 2 raised to 1, 3 raised to 1, this is the only form that it can take, composite number 6 can take when it is expressed in terms of product of primes. Similarly, आप 10 को देख ले, इसको आप 2 into 5 लिख सकते हैं, 5 into 2 लिख सकते हैं, but it is always 2 and 5 both raised to 1, 2 raised to 1 into 5 raised to 1. चलिए नेक्स्ट हम समझ लेते हैं एचसीएफ। हम एचसीएफ जानते थे, पिछले एक्सरसाइज में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ निकालना सीखा था। इस बार हम फैक्टराइजेशन मेथड यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज करते हुए एचसीएफ निकालेंगे। सिमिलरली हम एलसीएम भी निकालेंगे। तो ये कैसे निकलता है? एचसीएफ निकालने के लिए आपको प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, ये आपको उसके प्रोडक्ट्स करने होंगे। सिमिलरली एलसीएम के लिए आपको प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। सो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये ज्यादा समझ में आएगा। एक लास्ट इक्वेशन जो हमें याद रखना है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी is equal to A cross B. So multiple of two numbers is same as that multiple of their LCM and HCF. तो चलिए अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में टोटल 7 प्रॉब्लम्स हैं, तो चलिए एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रॉब्लम वेरी सिंपल प्रॉब्लम है, जिसमें हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं गिवन कंपोजिट नंबर्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो नंबर है वो है 140। सो 140 को हम प्राइम फैक्टराइज पहले करते कैसे हैं, तो हम डिवाइड करते हैं 140 को जिस भी प्राइम नंबर से ये डिविजिबल है। तो जैसे 142 से डिविजिबल है तो 70 होगा, फिर 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 होगा। सो दिस इज एक्चुअली 35, और 35 को फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 होगा। तो सिमिलरली आपको 140 को आप लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7, सो दैट इज 2 raised to 2 into 5 into 7। सिमिलरली 156 के लिए आप लिख सकते हैं 2 raised to 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13। 3825 को आप लिख सकते हैं 3 raised to 2 5 raised to 2 क्रॉस 17। 5005 को आप लिख सकते हैं 5 क्रॉस 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13। सिमिलरली 7429 को भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं। यू कैन राइट इट एज 17 क्रॉस 19 क्रॉस 23। सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। दूसरे प्रॉब्लम में हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है of the given pair of numbers
और हमें ये भी चेक करना है कि प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM of the two numbers is equal to the product of the two number itself. तो पहला जो पेयर ऑफ नंबर है वो है 26 एंड 91. सो 26 को हम लिख सकते हैं 2 into 13, 91 को हम लिख सकते हैं 7 into 13. So HCF of 26 and 91 will be 13. So how did we get this 13? तो हम पहले क्या देखते हैं कि कौन सा प्राइम नंबर कॉमन है 26 और 91 में. तो 13 is common to both 26 and 91. So we'll take that. So HCF is the product of all these common primes. So there is only one 13. So 13 will be the HCF of 26 and 91. Similarly, LCM. In case of LCM, we take the common one and whatever is the leftover. So all the leftover prime numbers and the common prime numbers. So here first of all we are seeing that the 13 is the common prime numbers. We will take that one, and the leftover prime numbers are 2 and 7. So we will take these two as well, और हम इसका प्रोडक्ट लेंगे और प्रोडक्ट कितना आएगा 182. तो एलसीएम 182. अब हमें ये चेक करना है कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इटसेल्फ. सो HCF कितना है 13, LCM 182. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है 2366. अगर हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें A into B, that is 26 into 91, you will find the same number 2366. Hence we can say that the LCM of the two numbers and product of LCM and HCF of the two numbers is same as the product of the two number itself. Let's jump on to the next problem. Next problem will be solved in a similar way. The two numbers are 510 and 92. So again we will do first of all the factorization of these numbers. So you can write 510 as 2 cross 5 cross 3 cross 17, and 92 as 2 raised to 2 cross 23. Now what will be the HCF of the two numbers? You will find only 1 2 is common to both these numbers. So that's why the 2 will be the HCF of the two numbers. Second, LCM. In LCM, first of all we take the common one, and then whatever is the leftover numbers that we will take. So the common 2 we have already taken. There is another 2 over here, so that 2 I will take. Then there is 5, 3 and 17. So I will take 5, 3 and 17, and then there is 23. We'll take 23 as well. So this product is gonna come like 23,460. So again we will multiply HCF and LCM. We'll find it as 46,920. When we multiply the two number itself, 510 cross 92, you will find the same number. Thus we can say that HCF of the product of HCF and LCM of the two number is the product of number itself. So let's go to the in the last problem. We have to do the similar exercise for the two number, that is 336 and 54. I think this would be easy for you, and it will be done in the similar fashion as it was done for the last two problems. So you can take a pause here and see how it is solved,
and finally you will be able to solve this problem. Let's jump to the next problem now. In the third problem, we are given three numbers and we have to find out LCM and SCF of these numbers. So let's take one by one. So first of all, we have three numbers, 12, 15 and 21. So we have to prime factorize these numbers. 12 can be written as 2 raised to 2 cross 3. 15 can be written as 3 into 5. 21 can be written as 3 cross 7, and the SCF of these three numbers will be the common prime, that is 3. You find that 3 is common to all these numbers, so 3 will be the SCF of these numbers. LCM of these numbers will be calculated. First of all, we have to put 3, which is common one, and then whatever is the leftover prime numbers are, like 2 raised to 2, 5 and 7, we'll write those as well, and we'll take product of these numbers. We'll find 420 as LCM of these three numbers. The next is 17, 23 and 29. All these are prime numbers, so we can easily understand that there will be nothing common amongst all three numbers. And these numbers cannot be factorized because these are itself a prime number. So in this case, SCF will be 1. So because 1 is the only number which can divide each one of these three. LCM of these prime numbers will be just multiplication of these numbers, that is 17 into 23 into 29, and we will find 11,339 as LCM of 17, 23 and 29. The last one is 8, 9 and 25. So 8 can be written as 2 raised to 3, 9 can be written as 3 raised to 2, 25 can be written as 5 raised to 2. SCF of these numbers will again be 1 because there is nothing common. So there is nothing, no prime number is common amongst these three numbers. So SCF will be 1 and LCM will be the product of these number itself. So that is 8 cross 9 cross 25, 1800 will be the LCM of these three numbers. In the next problem, we are given SCF of the two numbers as 9 and we have to find out LCM of the two numbers. So the two numbers are 306 and 657 and SCF of the two numbers is 9. Then we can find out the LCM using the formula A cross B divided by SCF of the two numbers. So 306, that is the first number, cross 657, the second number, divided by 9. You will get 22,338 as LCM of the two numbers. Fifth problem is a little tricky one, but it can be easily solved using prime factorization. The problem is check whether 6 raised to n can end with digit 0 where n is any natural number. So first of all, as we know that if a integer ends up with 0, then it must be divisible by 10. So what we do a prime factorization of 10 and we will find 2 cross 5. That means if a number is divisible by 10, it should also be divisible by 2 and 5. Now we take prime factorization of 6 raised to n. You will find that factorization is 2 raised to n cross 3 raised to n, where n is any natural number. That means the prime factorization of 6 raised to n
has only two kinds of prime number. One is 2 and other is 3. We observe here that 5 is not the factor of 6 raised to n. That means 6 raised to n is not divisible by 5. That also means that 6 raised to n is not divisible by 10 as well. If a number is not divisible by 10, it cannot end with 0. Hence, we can prove that 6 raised to n cannot end with 0 for any natural number n. Let's solve sixth problem now. In the sixth problem, explain why the numbers 7 cross 11 cross 13 plus 13 and 7 cross 6 cross 5 cross 4 cross 3 cross 2 cross 1 plus 5 are composite numbers. So you have to find out a reason to satisfy that this will be a composite number, not a prime number. So what we will do, for a prime number, it is only divisible by 1 or the number itself. But if it is a composite number, it will be divisible by other number as well, not just the 1 and the number itself. It will be divisible by another number as well. So here let's say a equal to the first number and b equal to the second number in the problem. Now what you see over here, you can easily take 13 common from the number and write it as 13 cross 7 cross 11 plus 1. What you are seeing over here is a is a number which is divisible by 13 because 13 is one of the factors of a. Similarly, in b, you can take 5 common and write it as 5 cross 7 cross 6 cross 4 cross 3 cross 2 cross 1 plus 1. Thus, what you see that b is also divisible by 5. This is enough to prove that these two numbers are composite numbers because these numbers are also divisible by 13 and 5 respectively, apart from 1 and the number itself. That's how we prove this, that a and b are composite numbers. चलिए लास्ट प्रॉब्लम पे हम लोग आ गए हैं. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point, same time and go in the same direction, say clockwise direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? So मान लेते हैं कि उन्होंने एक पॉइंट O, दैट इज ऑरिजिन पॉइंट, वहां से सोनिया और रवि बोथ दोनों ने स्टार्ट किया और दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक बार एक फुल राउंड चक्कर लगाने में. दैट मीन्स आफ्टर 18 मिनट्स सोनिया विल बी अगेन एट द ओरिजिन. सिमिलरली 36 मिनट पे सोनिया अगेन ओरिजिन पे होंगी and so on. Similarly, Ravi will take 12 minutes and he will reach at the origin again. After 24 minutes, Ravi will be again at the origin. So, Ravi will be at the origin at the multiple of 12. Sonia will be at the origin at multiple of 18 minutes. हमें वो टाइम पता करना है, वो मिनिमम टाइम जब सोनिया और रवि अगेन एट द ओरिजिन होंगे. तो शायद इससे ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर टाइम से x है तो x विल बी डिविजिबल बाय 18 एंड 12 बोथ. इससे हमें एक क्लू मिलता है कि
If we find out the LCM of the two numbers 18 and 12, this might give us the time when both will be at the origin again. Let's calculate the LCM of 18 and 12 now. It will be 36 minutes. After 36 minutes, Sonia would have completed its second round, while Ravi would have completed his third round, and they both will be at the origin. So 36 minutes will be the answer. Thanks for joining me. तो चलिए हमारा सेकेंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ. अब हम मिलते हैं अपने थर्ड एक्सरसाइज में. तब तक के लिए धन्यवाद.